Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Deputy Prime Minister Usman Ali, respected business community members, ladies and gentlemen, gives me great pleasure to be here first time in Dushanbe and not only visiting Tajikistan for the first time, but actually meeting the business community of Tajikistan for the first time. Mr. Usman Ali, the object of this meeting today is to have an interaction between the business communities of Tajikistan and Pakistan. I believe we have some 67 companies here from Pakistan today in different fields of textile, minerals, what else? Pharmaceutical growing sector in Pakistan. Huh? Logistics? Okay, that's news to me. So we have logistics as well. پاکستان تاجکستان مشترکہ بزنس فورم سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 67 پاکستانی کمپنیوں نے اس فورم میں شرکت کی، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ Very resourceful country, and we envy that. You have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. For the business community of Tajikistan, Pakistan is a country of 220 million people. So that is a huge market. And we hope, and I invite you, our business community will invite you, and I assure you that we will facilitate you in every way. The more trade between the two countries, the more it will benefit both the countries. At the moment, our trade is minuscule. Mr. Usman Ali, you mentioned it's $80 billion? $80 billion? $80 million means that there's a lot of potential. So I can assure you that we will be giving you all the incentives. The government's job is to facilitate. We're already trying to facilitate our own business community, remove all the hurdles in their way, making it easier for them to do business. And inshallah, you will find whenever you come that the government will do everything to make it easier for you to do business. I believe that there's a question answer. Is there a question answer? I don't know. So my commerce minister is here. I will be sitting with him. You can ask me any questions. We just wish and pray that finally, after 40 years of conflict, there will be peace in Afghanistan. It's extremely important for our trade, for there to be peace there, so that there's better connectivity. And I will be meeting your president, and your president and myself will be trying everything to make sure that there is peace, and especially between the two major communities, Pashtun and Tajiks. We will be doing our best to make sure that they get together and there is an inclusive government. And to my own business community, which is traveling here, I want to welcome you here, and I assure you that we will also be facilitating you.
پاکستان تاجکستان مشترکہ بزنس فورم سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 67 پاکستانی کمپنیوں نے اس فورم میں شرکت کی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بجلی مہنگی ہے۔ تاجکستان کے تاجروں کے لیے پاکستان 220 ملین لوگوں کی سرزمین ہے، جو کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے مابین جتنی زیادہ تجارت ہوگی اتنا ہی دونوں ملکوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت تاجکستان کی بزنس کمیونٹی کو فائدہ دے گی۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان تاجکستان مشترکہ بزنس فورم سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 67 پاکستانی کمپنیوں نے اس فورم میں شرکت کی ہے۔ تاجکستان کے تاجروں کے لیے پاکستان 220 ملین لوگوں کی سرزمین ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین جتنی زیادہ تجارت ہوگی اتنا ہی دونوں ملکوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ توانائی کے منصوبے خاصا 1000 کو جلد تکمیل بھی شامل ہے اور بزنس فورم میں 67 پاکستانی کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تاجکستان کی تجارتی کمپنیاں جتنی بھی ان کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت پاکستان ان کو فائدہ دے گی اور ان کے لیے مختلف اقدامات بھی کرے گی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور تاجکستان کے مشترکہ بزنس فورم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے متعدد چیزوں پر بات کی، جس میں اہم جن موضوعات پہ بات کی گئی وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 67 پاکستانی کمپنیوں نے اس فورم میں شرکت کی ہے۔ PhD free for all. Business, computer, electric, electronic, civil, mechanical. Any students came Pakistan, everything is free for Tajik students. یہ پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ مجھے حکم دیا تھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، میریٹ ہوٹل کراچی میں عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے ساتھ، اور میری لاسٹ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے مہربانی کر کے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کے بچوں کو بھی، جو آپ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے بچوں کو آپ اسکالرشپ دے رہے ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دے رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہوگی کہ آپ اس پہ غور بھی کیجیے گا اور ملاقات کا ایک وقت بھی دیجیے گا۔ آخر میں ایک شعر ضرور سناتا ہوں آپ کی ذات کے لیے۔ کہتا ہے کہ کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ، کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ۔ پاکستان کہہ رہا ہے کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں، میں لڑ کھڑایا تو کیا کرو گے۔ آخری عمران صاحب کے لیے ایک شعر ہے، اتنے ظالم نہ بنو۔ عمران بھائی آپ کے لیے، آپ تو اب ایک قیدی ہو گئے، جب کنٹینر پہ تھے تو زبردست تھے، تو اب تو پتہ نہیں کن کے چکروں میں آپ آ گئے۔ تو کہتا ہے کہ اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان تاجکستان مشترکہ بزنس فورم کا آغاز ہو گیا ہے، جس سے وزیر اعظم عمران خان کچھ دیر قبل خطاب کر رہے تھے۔ ابھی کوشچن آنسر سیشن چل رہا ہے، لیکن اس خطاب سے تو ان سے کوئی بزنس کی باتیں کریں، شعر و شاعری بات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ Marhamat bu savolu agar boşan marhamat Cünubi Tojikistoni agar yagon savol boşa marhamat. پاکستان تاجکستان مشترکہ بزنس فورم کا آغاز ہو گیا ہے۔ کوشچن آنسر سیشن اس وقت چل رہا ہے۔ جتنے بھی تاجر وہاں پر موجود ہیں ان کو وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے۔ اس حوالے سے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ افتتاح سرمایه‌گذاری تجارتی بانک‌های اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان آیا وجود دارد؟ Good afternoon, Your Excellency, Mr. Prime Minister. I would like to cordially welcome you to Tajikistan. My question is about the possibility of launching branches of Pakistani banks in Tajikistan for providing loans to our investors and businesses.
What you have just said is noteworthy. Yes, we will. The small answer to your question is we welcome all of you in various areas, and whatever you're saying, yes, those areas are welcome to us. Yes. We can, in Pakistan, there is no difference between giving a loan to Pakistan. Sorry, just a minute. Did you ask that if a Pakistan bank would be open in Tajikistan to give us? May I answer your as far as the banking facilities are concerned between our two countries, this is one of the things we are talking with your government, and inshallah in the coming months we should be able to get the banking facilities ready. If your question is that can a Tajik come into Pakistan and borrow money from the Pakistani banks, the answer is yes, it can be done. You will have to give all the necessary collateral, which are a standard operating procedure, whether you are a Pakistani or a Tajik. Thank you. تشکر. Marhamat, bu agar egon savolu bo'lsa. I am Tawqirul Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खान साहब, आपकी इजाज़त से मैं आप इमरान खान साहब और रज़ाक दाऊद साहब और आपकी पूरा टीम का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने डेलीगेशन ताजिकिस्तान पाकिस्तान से हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ताजिकिस्तान पहुँच गए 50 लोग, और सबसे पहले मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ. फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान से डेलीगेशन में 10 लोग शरीक है और उसमें ताजर बिरादरी हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, और ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट का मैं बेहद मशकूर मेहमान नवाजी और आपकी कौंसलेट और मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. खान साहब, हमारा उर्दू थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो. खान साहब, हमारा ट्रेड पॉलिसी 20-15 साल से इस ट्रेड पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना ट्रेड पॉलिसी है. मुल्कों ने बहुत तरक्की किया था. हमारा ट्रेड पॉलिसी बहुत 20 साल से, उसको रज़ाक दाऊद साहब से हमारा ये रिक्वेस्ट है. दूसरा, खान साहब, हमारा एक्सपोर्ट बलूचिस्तान के हवाले से हमारा साथ 1200 किलोमीटर बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है और 700 किलोमीटर ईरान के साथ है. यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान के साथ 500 आइटम एक्सपोर्ट हो रहे हैं और ईरान के साथ हमारा 5 आइटम एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ईरान के से इंपोर्ट हो रहे हैं 500 आइटम. तो मैं अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ ट्रेड पॉलिसी बेहतरी अच्छा होना चाहिए, और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान उसके साथ हमारा लिंक रूट जो है, जो शेरखान बंदर है और चमन के रास्ते बहुत शॉर्ट रूट है. तो मैं खान साहब इस पॉलिसी पे, और अगर पॉलिसी में नरमी हो जाए, बलूचिस्तान से एक्सपोर्ट करने में, बलूचिस्तान में 75% लोगों का रोजगार ज़राअत है या लाइक स्टॉक है, कोई कारखाना नहीं है. तो खान साहब, अगर हमारा ज़राअत को तरजीह दे हमारा बलूचिस्तान वाले लोग, जिस तरह इस तरह आपने इस डेलीगेशन में शामिल किया था, हम में बुगे वतन लोग गए, हम बलूचिस्तान एक्सपोर्ट जिस तरह पॉलिसी आप मैं बहुत मशकूर हूँ. शुक्रिया. और खान साहब, एक छोटा सा वो है कि खान साहब, ग्वादर से हमारा रेल का ट्रैक जो मुल्क की तरक्की एक्सपोर्ट के लिए ताजिकिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान से, ग्वादर को लिंक ट्रैक, रेलवे ट्रैक कोयटा तक होना चाहिए, सकर तक तो पूरा पाकिस्तान, और बलूचिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल प्रोसेसिंग जोन 3 होना चाहिए, क्योंकि मादनियात के शुबे में और ज़राअत और लाइक स्टॉक में. थैंक यू खान साहब. जी, अस्सलाम वालेकुम जी. I am Tawqirul Haq, Chairman, Pakistan Pharmaceutical Association. First of all, I would like to thank Ministry of Commerce and TDAP for organizing this excellent business forum, which has provided us a gateway, and it is paving the way to enter into CIS countries.
In July, we went to Uzbekistan and Sri Lanka, and I would like to thank Prime Minister Saab for, taking special focus, and his presence has, not only for pharmaceutical but for all other sectors have provided an opportunity to look way forward to expand our export. I would like to take this opportunity, because Deputy Prime Minister is sitting here, on behalf of pharmaceutical industry, we are all set to come here because we have seen during the last 2 days lots of opportunities here. We have already signed 4 MOUs today, and the request from the government of Tajikistan is that the best way to provide quality medicines from Pakistan is the speedy registration of our products here. It takes more than 2 years' time to get our product registered. So if you can help as a special case on this occasion that we are all here, if you can, help us to get our product registered on timely basis and at a faster pace, we will be able to bring quality medicine here. That will not only increase the business, but it will also help your people. पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम का आगाज हो गया है। आप लाइव मनाजिर मुलाहिजा कर रहे थे जिसमें भी क्वेश्चन आंसर का सेशन हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ताजिर मुख्तलिफ किस्म के सवालात का तबादला कर रहे हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब खिताब कर रहे थे तो उनका कहना था कि इस फोरम का मकसद ताजिकिस्तान और पाकिस्तान की जो ताजिर बरादरी है उनसे बातचीत करना था। उन्होंने मजीद कहा कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 67 पाकिस्तानी कंपनियां इस फोरम में शिरकत कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में ताजिकिस्तान के ताजिरों के लिए 220 मिलियन लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही दोनों मुल्कों को इससे फ़ायदा भी होगा और इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के इक़दामात को भी यकीनी बनाया जाएगा। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि मैं ताजिक जो तिजारती कम्यूनिटी है उनको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान उनको तमाम तर इक़दामात में मुआवनत फराहम करेगी, उनकी मदद करेगी और कोशिश करेगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कुछ देर पहले पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि अब्दुल रज़ाक दाऊद भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ इस वक्त मौजूद हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। ताजिर बरादरी का जो एक वफ़द है वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा इस दौरे पर मौजूद है ताकि उनको ताजिकिस्तान में मुख्तलिफ जो तिजारत की सरगर्मियाँ हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे रूशनास कराया जा सके, जिस पर ताजिर कम्यूनिटी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया और ये भी कहा कि ताजिकिस्तान आकर कुछ कंपनीज के साथ उनके MOUs भी साइन हो गए हैं, जो कि एक अच्छी और खुश आइंद खबर है। मज़ीद आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त ताजिकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम का जो तकरीब है वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी मौजूद हैं और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की जो बिजनेस कम्यूनिटी है वो भी इस मौके पर मौजूद है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सवालात का सिलसिला जारी था जिसमें मुख्तलिफ ताजिरों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने तजावीज़ भी पेश की, उनसे सवालात भी पूछे गए और ताजिक हुकूमत से भी अपने जो सवालात थे और अपने जो मुतालबे थे उसका इजहार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब इस फोरम से खिताब कर रहे थे तो उनका कहना था कि सरमाएकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए कोशा हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश है कि जितनी ज़्यादा सरमाएकारी पाकिस्तान में हो सके उतना ही बेहतर है। तवानाई के मनसूबे कासा 1000 की जल्द तकमील चाहते हैं और उन्होंने मजीद कहा कि बिजनेस फोरम में तकरीबन 67 पाकिस्तानी कंपनियां शिरकत कर रही हैं, जो कि एक खुश आइंद बात है। मजीद उनका कहना था कि दोनों मुल्कों को अपनी तिजारत बढ़ाने के लिए इक़दामात करने होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा इक़दामात होंगे उतना ज़्यादा दोनों मुल्कों को फ़ायदा भी होने वाला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के ताजिरों के लिए 220 मिलियन लोगों की सरजमीन है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मौके पैदा कर देती है और उनको इस हवाले से मज़ीद इक़दामात भी करने चाहिए। ये थी PTV ताज़ा तरीन और अब रुख करेंगे स्पोर्ट्स की खबरों का।